सर लाइन ना हम गरम रे अंधार रे बहुत असुविधा रे चलुछु गाँव रे भी लागिनी हम छुआ को केना रखमु अंधारे हमको लाइन लगे दियो छुआ को केना पाठ पढ़ामु अंधारे आमे सोइला बेले राति रे कोन साप कि कटिया कोन आसिले मध्ये आमे जानि पारनु चुबे देले आमे कोन जदि करेंट थांता आमे लाइट जोले के देखि थांतु डिब्री द्वारा अक्षर चिनि पारनु सर माने जहा क्लास रे देथिबे जति कि माने जहा भी पढ़िया पई जहा भी खातरा लिखिया पई देइ छथि सर सेति कि लिखि पारुनु नहीं नहीं गरम रे देह मुड़ फुसकी ढुसकी बाहरी जाउची और गरम हो जाउची जो और काना हवा केते प्रॉब्लम होची पाठ पढ़िबा पई छुआ माने भी पाठ पढ़िबा को आ ट्यूशन करबा को मोबाइल चार्ज करबा पई बाहा घर ले भी करेंट नाही आलुओ हो नाही किछि नाही अंधार हे के अछु आ मच्छा कामुडुची फैन नाही सुइबा पई भी असुविधा होचु आम गाँ को भारत स्वाधीन होला पोरे भी आज सुधा करेंट संजोग नहीं। There were the days in many Indian villages when life was coming to a standstill as soon as the sun sets. Food has to be cooked before it gets dark, and children have to finish their studies. The alternative was the dim light of kerosene lamps. Farms without electricity cannot use tube wells and bore wells to irrigate their fields. Villagers lived in the dark for years. They didn't have mobile phones for contacting their relatives living in other parts of the state. In summers, ladies and children at home during the day faced the ill effects of heat waves. Lack of electricity had varied effects on their lives, from adversely affecting the education of the children to low agricultural productivity. But now the scenario has been changed. Life in the village at night is not dull and dark. Now they are using fan and enjoying their television. It's full of activities and momentum. The transformation could happen due to Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, Saubhagya, and Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, scheme of Government of India for rural electrification. For the first time in their life, these villagers have experienced the light. एबे लाइन आलु हैला खुशी आमे रांधिलु खुशी रे खाइलु एबे आसीला जे पढ़े रे पाड़छु तो एबे करेंट आसिला मते बहुत खुशी लाइन आसी गला हमें बहुत खुशी हेनु इतो आम घर को लाइन आसी गला आज्ञा बहुत खुशी आमे होछु आज्ञा। More than 3.8 lakhs BPL and 4.6 lakh non-BPL households are electrified under DDU-GJY and Saubhagya schemes respectively across more than 17,000 villages, including 530 numbers completely unelectrified villages. This is the scheme of Government of India for rural electrification. This mammoth and tough task was completed before time by India's largest power utility, NTPC. To accomplish electrifications in
tough terrain of rural Odisha was a significant achievement by NTPC. Electrification has changed the life of rural Odisha. But there were many challenges and hurdles to be overcome first. Before NTPC can start action for the most ambitious plan of rural electrification, forest clearance and wildlife clearance for villages located in deep forest and hilly areas was must. This needed meticulous and time-bound execution. The dedicated and high-tech team of NTPC worked out all the minute details and got all the necessary clarifications. Among all the tasks, erections of poles were one of the most difficult works on rocky ground in villages located in hilly areas. As Agar machine could not be reached to tough locations, manual digging was carried out. In the absence of the approach road, shifting was only option which was done even for more than 5 kilometers in few cases. "12 out of 15 districts in NTPC scope were LWE, left-wing extremism affected areas. Mostly Koraput is affected by Maoist activities frequently. But NTPC overcame all the problems with the sheer motivation of goal setting. खुटा माने गड़ा होचे लाइन आस जहाँ कर आसले टिके हमको टिके सुविधा रु पार है जिम भल लागबा हमको छुआ पुता हमर अंधारे बिनारे जोछन लाइन टिके पाले सुविधा हमु पंखा नहीं लाइन नहीं जे गला जे ई गहदा गुमकी थी हमें गला जे होता है जोछु तार फार टनाटनी चली छे और यदि लाइन आसी गला हमें बहुत खुशी ही परमु लाइन खुटा पड़ी छे खुटा ने पड़ी छे हमें लाइन आसला में खुशी हम लाइन नहीं थी जे आज्ञा बहुत असुविधा रहे छन बोले खुटा पड़ला न लाइन आसी गले हम बहुत खुशी रे रहनु. Infrastructure in few villages in Kalahandi district was severely damaged during flood in 2017, which was revived within a week's time. This was the most challenging of all, but NTPC maintained the timeline. Nearly 40 villages of Gajapati district were affected during Cyclone Titli in 2018, which were revived on mission mode in coordination with GOO, Government of Odisha, and Southco. NTPC had designed strategy to connect these villages for electrifications. फैन फैन टे लगे भी शोवाई भी लोक मान आराम से मिलूँ कि लाइट टे आज चार्ज करूँ कि मोबाइल टे आज चार्ज करूँ कि टीवी टे दुनिया भल मंद टे जापर से आड़े सुविधा सबू है मन खुशी लगुच आ कौन लाइन देले आम भर रे चलुछु रात बेली भी भर रे चलुछु दिन बेली भी भर रे चलुछु आम बहुत खुशी रे अच्छु तार पिला छुआ भी पढ़ी पार नथिले एबे करंट आसनु करंट फरंट आलुओ रे 10टा जाक भी पढ़ी पारजंती दीप जळाई के पाठ पढुथिलु देखा जाउर थिला भलसे एबे करंट आसीबारु स्पष्ट भाव रे देखिकी लेखि मध्ये पारछु एबे टैक्स एबे करि पारछु भल सुविधा कर रे छ लाइन फाइन आसला देनु जेनु भालू भुला भी आसुतले छुआ पिला भी याद टिके भल आकार रे छ आज्ञा गाँ रे करंट नथिबा जगु आमे देश विदेश रो खबर मध्ये जानि पारु नथिलु किंतु वर्तमान करंट पहुँचीबारु टीवी आ रेडियो माध्यम रे सब देशर खबर मध्ये आमे देखि पारुछु बा सुनी पारुछु दीर्घ वर्ष धरिकी सर आम डिब्री रु पाठ पढ़ुलु सर एबे जो विद्युत आलु आसीबारु आम बहुत सुझोर पाठ पढ़ी पारुछु सर सर बहुत वर्ष हैला सर आम लंटन डिब्री जळे की पाठ पढ़ुलु सर एबे माने करेंट आसीबारु सर आम बहुत सुविधा रे पाठ पढ़ी पारुछु. 15 districts were spread over 18,420 square kilometers of area.
However, all this was changed with access to electricity in the village. Flour mills and motors were also used in these villages now. अभी लाइन के व्यवस्था होने से गांव-गांव में प्राय ऐसे हालर मिल का व्यवस्था हुआ है जिसमें हमारे किसान बंधु अपने धान को चावल बना सकते हैं और इससे बहुत उपयोग पाए हैं। The 100% household electrification under Saubhagya scheme is achieved within scheduled target date, and NTPC played a pivotal role in this. To encourage the new life with the new light, many dignitaries voluntarily came forward to inaugurate rural electrification successful execution. After the village got access to electricity, the villagers feel they can achieve everything. ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆଇବାରୁ ଜଳ ହେଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। पंखा टे भी पवन टे पाई पारछुं आमे टीवी देखि पारछुं छुआ पिला माने पाठ पढ़ी पारछुं तो बहुत खुशी लागुଛି हम। ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ରାତି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି। लाइट आसिला पर हमको खुशी लगुच भल भाव में पढ़ुचु। हम लोगों को भी खाना पकाने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो हमें भी परेशानी होती थी। अब लाइट के आने से हम लोग को बहुत सुविधा हो रही है और बहुत हम लोग खुश हैं। आपण मान के नमस्कार करी कहूँ आया बहुत सुविधा है आया लाइन फाइन जेन आसला आम मोबाइल भी चार्ज कर पार्छू सब सुविधा भी रोचु आया भालू बचर बचुचु आया एतकी आम अनुरोध करी आपण मान कहूँ आया नमस्कार। Of hope and happiness illuminate each and every household in the nation.